Hello, how are you? Today we learn class 12th macroeconomics and the chapter is circular flow of income. Now this is a quite big chapter, and from this chapter first we'll take up the circular flow of income and basic economic activities. 1. Number 2 point under circular flow of income उसमें 3 हिस्सा रहता है, that is circular flow of income in 2-sector model, circular flow of income in 3-sector model and circular flow of income in 4-sector model. But before I start that topic, we will discuss one very important things which actually you can say basic concepts, okay, and that is your basic economic activities. Now basic economic activities का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word activities? Activity means doing some work, okay. Now when you talk about economic activities, now economic activities refer to the activities which are performed to earn income, okay. We do some work to earn income, that work, that activity is called your economic activity, okay. Now under this economic activity we have got 3 concepts. One is your production, second one is your consumption, and third one is your investment. Now let us take production. Now what do you mean by the word production? In economics, production, if you take the definition of productions, production means transformation of input into output. Production means transformation of input into output. So here P is your production, Q is your input, and F is your showing the functional relationship between input and output. मतलब आप कितना इनपुट दे रहा है तो आपको आउटपुट मिल रहा है. Now जो इनपुट है ना, what are these inputs? These are your land, labor, capital and organization. These are the basic inputs. मतलब देखो, these inputs land, labor, capital and organization. लैंड मतलब इट्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. लैंड मतलब वो नहीं समझता हम लोग कि धरती को समझता है. नो, लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्स, ओके. सो एक प्रोडक्शन, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सम गुड्स तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज योर लैंड. देन यू नीड लेबर, श्रम चाहिए आपको. देन यू नीड मशीन्स, कैपिटल चाहिए आपको. Now capital, it can be your fixed capital or it can be your working capital. Raw material हो गया, money हो गया, these are your working capital. अब machines हो गया, building हो गया, factory हो गया, ये सारा जो आपका है fixed capital. Anyway, capital लेके चलते हैं हम लोग. And organization is management. All these factors of productions are put together in a proportionate manner, proportionately. Some amount of labor, some amount of raw material, some amount of capitals and organizations are put together in such a manner that we get best of the best products. That is what ये जो inputs आपका है, ये सारे inputs आपने मिलाए एक साथ, प्रोसेस में डाला है और आउटपुट बन के आपके पास चला है. That is what is called output. So production is a function of output. Okay. Now see here one thing more that we have done. Next is your consumption. देखो, consumption is a very big word. To a layman, आम जनता के लिए consumption means eating up of something. But in economics, consumption means using of some goods and services. So from that point of view, we consume everything. We consume chair, bench, furnitures, clothes, house, fan, buildings, etc. We consume. Means we get satisfaction or utility. That is what is called your consumption. Now consumption, what is written here? Consumption is a function of income. Y is your income, C is your consumption, and this F shows the functional relationship between income and consumption. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. दैट इज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज. इट हैज़ टू बी लेस देन ग्रोथ ऑफ इनकम. ठीक है, तो
here you got a positive relationship between income and consumption that you can show in this way. Say you take here consumption, you take here income, no problem. आपका एक काम हो गया. मीन्स जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा. ओके, दैट इज शोन हियर. कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ income. We have got positive relationship between these two. Then comes your investment. Investment means the excess of income over consumption. इसका मतलब है, देखो I'll break it. Income equal to C plus S, consumption and saving. And in classical economics, what you know, saving is always equal to इन्वेस्टमेंट. सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट का बराबर रहता है. जो मैंने सेविंग किया वही इन्वेस्टमेंट होगा. सो अब लेट्स से आपका इनकम है 100 रुपया, इनमें से आपने 90 रुपया खर्चा किया कंजम्पशन में और सेव किया आपने 10 रुपया सेविंग के लिए आपने रखा है. सो योर इनकम इज 100. आउट ऑफ दैट 100 रुपीज़ आपने 90 रुपया खर्च किया कंजम्पशन के लिए, तो आपका बचा 10 रुपया, दैट यू सेव. नाउ व्हाई डू यू सेव? Why do we save? We save to get income in the form of interest. Number one. Number two, we save to make our future safe and secured. Number three, we save for our next generation, for our children. We would like to see that their future is safe and secured. These are the basic reason for saving. Okay, anyway, the motto is also one, we can earn more income from saving in the form of interest. So saving and interest are also positively related. मतलब जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपका सेविंग भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. यू कैन राइट सेविंग और इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट. ओके, सो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. So these are the three basic economic activities that we have. Now we have done this part. Now here circular flow of income. What is it? मतलब you know, income keeps on rotating. अब मेरा इनकम हुआ तो नेक्स्ट मोमेंट मेरा खर्चा होगा, फिर मेरा इनकम होगा तो खर्चा होगा. एक दूसरा बात है क्या है, इन अ सोसाइटी देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशन. मतलब मेरा इनकम है मतलब आपका खर्चा हुआ, या आपका इनकम है मतलब मेरा खर्चा हुआ. आपने जब खर्चा किया तभी जाके मेरा इनकम होगा. सो मनी कम्स एंड मनी गोज इन ए साइक्लिकल मैनर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ अंडर दिस देयर आर टू concepts. One is your circular flow of income without saving, without bank, and circular flow of income with banks or with saving. Now देखो बैंक मैंने नहीं रखा है, I have not kept here bank, means circular flow of income without financial market or bank. So what happens here in such case, y is equal to c. मतलब आपका सेविंग जीरो, इसका मतलब सेविंग इक्वल टू जीरो. आप कोई सेव नहीं कर रहा है, यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग. मेरा 100 रुपये कमाई हुआ, मैंने 100 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है, देयर इज नो सेविंग. व्हाट हैपेंस हियर, सी देखो अब क्या हो रहा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है. दिस हाउस होल्ड सेक्टर हैज गॉट सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. लाइक हाउस होल्ड सेक्टर पास जमीन है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशंस है. ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर विद द हाउस होल्ड सेक्टर. वो क्या करेगा, दे विल सेल इट. दे विल सेल इट. कहाँ बेचेगा, फार्म के पास. सो व्हाट वी फाइंड, देयर इज फ्लो ऑफ goods to the farms in the form of raw material, in the form of labor, in the form of capital. These things move from housing sector to farms. That is called real flow. Now अब एक दूसरा बात आ जाएगा आपका. Real flow means flow of goods. फ्लो ऑफ गुड्स, सामान का जो फ्लो होता है. तो क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पर, लेबर का फ्लो हो रहा है, रॉ मटेरियल का फ्लो हो रहा है, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स
basically you can say, and services also. Okay, fine. The firms have purchased these factors of production from household sector. So they are the buyer, they are the seller. तो एक फ्लो था, रियल फ्लो हो गया, सामान यहाँ से यहाँ चला आया, बदले में फार्म्स क्या दिया इनको, बदले में फार्म्स इनको पैसा दिया है. ओके, दे हैव गिवन मनी, दैट्स कॉल्ड योर मनी फ्लो. फैक्टर पेमेंट also you can say. So farms has made the payment to household sector for buying these factors of productions. That's called your money flow. So money flow means flow of money from one sector to another sector. चलो हो गया. Now अब क्या होगा, फार्म्स तो सामान खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदा, मशीन खरीदा, ऑर्गेनाइजेशन खरीदा, सब कुछ में प्रोडक्शन में डाल दिया, प्रोसेस में डाल दिया. So all these factors of productions are in the production process in a proportional manner, and ultimately what I've seen, सामान बन के बाहर चला आया. So goods been made by using these factors of production. अब इस सामान क्या करेगा farms? What farm will do with the goods produced by them? They will bring these goods to the market to sell. अब ये farms सारा सामान लेके मार्केट पर आ जाएगा बिकने के लिए. देखो पहले ये बायर था, ये सेलर था. Now farms are the seller and house sector will be the buyer. इनके पास पैसा है. They have earned money by selling raw material in the form of rent. They have earned money by selling labor in the form of wages. They have earned money in the form of interest by selling capital. ये जो फैक्टर इनकम इनके पास है, this income they will spend for buying goods from farms. तो अब क्या हो रहा है, farms are bringing goods and selling these goods to the household sector. Household sector सामान बेच रहा है, कौन बेच रहा है, farms. So you can say there is flow of goods from farms to household sector. This is what we call real flow. ठीक है. अब खरीदा किसने, इन्होंने खरीदा. बेचा किसने, इन्होंने बेचा है. मतलब फार्म्स ने बेचा है, हाउस सेक्टर ने खरीदा है. तो फार्म्स के सामान तो यहाँ पर चला है, दैट इज रियल फ्लो. दे हैव पेड मनी, तो यहाँ से अभी पैसा जा रहा है फार्म के पास. दैट वी कॉल मनी फ्लो. मनी पेड फॉर बाइंग गुड्स फ्रॉम द फार्म्स. और इसमें क्या हुआ, एक बात देखो, इन्होंने जितना कमाया था वो पूरा पैसा खर्चा किया है. दैट इज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. वाई इज इक्वल टू सी. देयर इज नो सेविंग. There is no saving. Clear now? So this topic we have discussed, and if you have got any concept clear to be made clear, I'll tell you now. This is basic economic activities you have done. Under this, you've got 3 basic economic activities: production, consumption, and investment. Okay, we have explained all these things. Then comes your this circular flow of income that I have done here without bank. Bank nahi hai. There are 2 sectors only, housing sectors and farms. That transaction I have shown. Now this transaction you can show in other form. 1. Housing sector to farms. Housing sectors to farms. क्या word है ये? Real flow. Number 2. Farms to हाउस सेक्टर, मनी फ्लो. 1 2 हो गया आपका. थर्ड आपका आ जाएगा फार्म्स टू हाउस सेक्टर, रियल फ्लो. एंड 4 नंबर आपका आ जाएगा हाउस सेक्टर टू फार्म्स, मनी फ्लो. So altogether there are 4 flows. That is, you can say this is called your transactions. Okay, that is simply called your transactions. There are the 4 transactions altogether. Very simple, very small, and you need not learn, you need not write literature. This flow chart you make, very simple flow chart,
and then explain in the form of the structure transaction, your answer is ready, complete, 100% complete. Okay, now if you've got any doubt, you can put your comments, okay, and I will give you answer again in the form of a video. Thank you.